Very good morning, students. Here we are in the topic of operating system, class 8, subject computer applications, topic operating system. Here we will learn about the what is operating system in computer, what is the role of operating system in computer, and the types of operating system in computer. Okay, so let's move on. Here is the definition of operating system. An operating system is the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory and process as well as all of its softwares and hardware. It also allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Without an operating system, a computer is useless. तो हम इसे समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सबसे अहम सबसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। अगर कंप्यूटर को हम चला पा रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही है। जो पहले कंप्यूटर आते थे उसमें विंडोज़ नहीं आती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जो कंप्यूटर चला पा रहे हैं इतना ईजिली जस्ट बिकॉज हेल्प ऑफ Windows. Otherwise, it is not easy to operate the computers without the Windows, because what happens when we operate the computers without Windows, we have to use it lots of command. As you know that we has used in a DOS command to run the computers without of Windows. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मेमोरीज को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट के बीच एक मीडियम क्रिएट करता है। वॉट एवर वी जस्ट पुट द इनपुट फ्रॉम द माउस और कीबोर्ड, इट गोज़ टू आउटपुट। बट वॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू डू, इट मेक द यूनिट्स, इन दोनों को आपस में कंपेयर करता है, इनपुट की यूनिटों को आपस में लेता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। I hope you understand what is operating system. Computer का operating system is a system software which is basically used to run the computers easily, and it is also make the make the medium between the input and output devices. It gives us the result. जब कंप्यूटर को हम चलाते हैं तो इनपुट से डाटा लेता है और आउटपुट देने के टाइम पे कंप्यूटर को डाटा को सही से स्टोर करता है। As you all know, the computer only understand the machine language. If you want to communicate with the computer without knowing the machine language, we use Windows software, also operating system. Okay, let's move on to the next slide. Now we understand the types of operating system. Here is the types of operating system. The three most common operating system for personal computers are Microsoft Windows, Mac operating system, and Linux. Modern operating system use a graphical user interface or GUI. A GUI lets you use your mouse to click icons, buttons, and menus, and everything is clearly displayed on the screen using a combination for graphics and text. तो हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ विच वी आर यूजिंग नाउ। कंप्यूटर में आज हम जो विंडोज़ यूज़ करते हैं वो विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट का दिन है। और सेकंड इज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली जो कि हम देख रहे हैं कि आईफोन जो मोबाइल होते हैं उन्हीं में भी यूज़ किया जाता है, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक लैपटॉप में भी यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड इज़ लाइनक्स। लाइनक्स इज़ अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बिल्कुल फ्री होता है और ये ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है। और वैसे लाइनक्स का यूज़ इन आम कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा किया जाता है, बट बेसिकली वी आर यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस लाइनक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रन because it is a totally command based operating system. That's why in the commonly we don't use, but in the commonly we use Windows. GUI भी इसका एक उदाहरण है। GUI graphical user interface होता है। The machines which we are using now just click and give us the output. It totally depend on the GUI, graphical user interface. Now here we will learn about Microsoft Windows. Microsoft created the Windows operating system in the mid 1980s. There have been many different versions of Windows, but the most recent ones are Windows 10 released in 2015. जो आज तक का सबसे लेटेस्ट विंडोज़ है वो हमारे पास विंडो 10 है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। जो सबसे पहला विंडो था माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1980 में, और विंडो 10 से पहले भी विंडो 8 बनाई थी, विंडो 7 बनाई थी, विंडो विस्टा 2007।
that all the feature has made the window very easy to operate. विंडो इन्हीं फीचर्स की वजह से विंडो 7 के बाद इसमें कई विंडो में कई प्रकार के चेंजेस आए, जिसके द्वारा इट मेक्स अ विंडोज़ वेरी easy and fast service. And here we will learn what is a Mac operating system. Mac operating system, previously called OS X, is a line of operating system created by Apple. It comes preloaded on all Macintosh computers or Mac. Some of the specific versions included Mojave, released in 2018, High Sierra 2017, and Sierra 2016. इसी तरह it's just like a Windows, Mac operating system has divided into many parts. We can say it released in the latest versions we are using in the computers and the laptops and the mobile also. So I hope you understand what is a Windows operating system, what is a Mac operating system, or what is GUI. And now here would be the question, why we need operating system? Why do we need an operating system? Computer system is equal to hardware plus software. Computer दो चीज़ों से मिलकर बना है. It's called, one is hardware and second is software. If you want to make communicate between hardware or software, then you need operating systems. When you just suppose if you want to put something keys from your keyboard and you want to type something else, then you will use your hardware, but you don't touch your softwares. That's why operating system has to do the same things. You give the input from the keyboards, it take the inputs and give you the output. So it is a Windows is a communication between hardware and the softwares, and that's the same things has happened by the system software. It's called Windows operating system is the same thing, and the system softwares application programs communicate with system hardware by the operating system. It's the only way to communicate between hardware and software. So program can write software to run on an operating system. It is also like different types of computer systems will require different operating system features. Network and signal user PC, mobile phones, tablet, computers, game console. इसी प्रकार मोबाइल्स में भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, which we are in the present the mobile we are using, it comes with the Android operating systems. Now here is the role of operating system, the functions of an operating systems. First, controlling computer hardware, CPU, RAM, printers, disk drive, keyboard, mouse and touch screen. It's controlling all the way. The organizing files on storage media. इसी प्रकार RAM, CPU इनके द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. और ऑर्गेनाइज फाइल्स जो कंप्यूटर में हम फाइल्स सेव करते हैं, विच आर ऑल्सो हैपन्स बाय द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड थर्ड इज प्रोवाइडिंग द यूजर इंटरफेस, रिसीविंग कमांड्स फ्रॉम द सिस्टम ऑपरेशन. कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट देते हैं दैट इज कॉल्ड कमांड. इस कमांड को रिसीव करता है एंड देन इट गिव्स आर द आउटपुट, गिव अस द आउटपुट. ओके. द सिक्योरिटी, इट डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूजर्स. कंप्यूटर में हम जब भी अनऑथराइज काम करते हैं इसी को प्रिवेंट करता है. जस्ट लाइक इट समटाइम व्हेन यू यूज़ इंटरनेट, इट समटाइम्स इट हैपन्स दैट इट वुड बी हैक. तो कंप्यूटर में किसी प्रकार को वायरस रोकने के लिए इट प्रिवेंट वायरसेस ऑल्सो टू हैक योर कंप्यूटर्स. So it's a good security features of the operating system. And also it protecting the data files, is reporting the login times. When you log in the computer, it keep the login times in the safe in the computer. So I hope you understand all the features of the computer. So we will see you in the next topic. Thank you. Keep subscribe and like other videos. Thank you so much.